చేసిందంటే ఏం రోగం లేదు. బీటి పత్తి మేతనే సత్తానే అవి. మీరు పత్తులు మేపకుర్రి. మేడం సార్ అట్లా అనుకుంటుంటే మరి మీ పత్తి మేత పత్తి మాకు అప్పుడు ఏం లేదు, గొర్రెలకు మేత కూడా లేదు, మరి పత్తి మేత మీ ఇష్టం మరి అట్లా చచ్చిపోతాయి. Alarmed by the deaths, the Andhra Pradesh State Animal Husbandry Department had to step in. Seed producers have presented some data and also some PowerPoint presentation was given. So it is mostly talks about the seed and the cake like that. But what our people, the farmers, are interested in knowing, because these studies have been done on the cotton seed or the cake or the, but what is really happening in the field is not after the sheep are not have not died after eating the cake or seed, but the plant as it is, after it is harvested, the leftover plant. So all those people who are present, they have asked that a thorough research has to be done. If that plant is fed, what will happen to the animals? So if they die, what could be the reason? To avoid that, what has to be done? I mean, we asked our people to tell farmers, till the clear cause is established, it is advisable to restrain ourselves from going into those fields. That's what we said. As it became increasingly evident that animals were being poisoned due to feeding on the BT cotton, there rose a concern about its impact on human beings too. Since cotton is not directly consumed by human beings, biotech companies argued that it will not cause any adverse effect. However, cotton is used for making clothes. Food is cooked in cotton oil. The milk that people consume could be from cattle fed on BT cotton plant and oil cakes. The biotech companies chose to turn a blind eye to these facts. As expected, farmers engaged in harvesting BT cotton across the country are now reporting allergic reactions. सही पहले साल जो बीटी लाया सी जी उदों कोई इन्ना खास नहीं पता लग्या जी लेबर का अलबर तो लेबर आउंदी साडी चुगण वास्ते। दूजे साल जदों लेबर उही अलबर तो दुबारे आई ते उन्हां दे जदों चुगदे हुंदे सी नरमा जी उदों बाद उहदे खारस होण लग गई लेबर ते कदे किसी आदमी दे कदे दो दे कदे चार दे जो खारस होण लग गई। जदों उन्हां दे शरीर दे विचों असीं कपड़े ताहां चढ़ा के देखे जे हत्थां बाहां दे पैरां दे उन्हां दा सारा शरीर लाल सी ते छोटे छोटे फुंसियां सी। अभी देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं और कॉटन के एक्सपीरियंसेस हमारे सामने हैं। कॉटन में जो पिछले 5 बरस से इस देश में कॉटन का एक बड़ा भारी प्रचार किया गया था, तब भी हमने इसका शुरू में विरोध किया था और उसको हमने किसानों को भी कहा था, हमने सरकार को भी अनेक बार चेताया था कि ये बीज ना किसान के हित में है, ना यहाँ के इंसान के हित में, ना यहाँ के वातावरण के हित में। सरकार उस बात को, सरकार ने तो ध्यान दिया ही नहीं, लोगों ने भी, किसानों ने भी उस प्रचार में आके उसको अपनाया और आज उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। किसानों में उसकी वजह से अनेक तरह की बीमारियां, एलर्जी उसकी वजह से आई हैं। पशु हमारे उसके पत्तियां खाने की वजह से मरे हैं। उसका जो टोटल जो ह्यूमन लाइफ पे उसका असर आपको थोड़े दिन के बाद देखने में मिलेगा। उसमें जो दावा ये कंपनियां कर रही थी कि इस पे कीड़ा नहीं आएगा, आज इस साल वो बिल्कुल वो हो गया। उसमें नई नई किस्म के दूसरे जो कीड़े हैं उस फसल पे आए हैं और उनका नतीजा जो वो दावा कर रहे थे कि इस पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, किसान को पेस्टिसाइड डालना पड़ा इस साल उस पर। और ये निश्चित है कि अगले साल उस पर कीड़े और ज़्यादा होंगे, दवा का खर्च वहीं बढ़ेगा। किसान जिस झांसे में फंसा था कि ये फसल बिना दवा के होगी, आज वो बीज भी महंगा खरीद रहा है और बीज के साथ साथ वो दवाई जो पहले डाल रहा था वो दवाई भी उस पर डाल रहा है, उसकी लागत बढ़ी है। तो ये तो एक फसल के साथ हुआ है, जितनी फसलें आएंगी हमारा ये मानना है तमाम के साथ यही होने वाला है। This brings to mind a vital question. How were biotech companies allowed to develop
and sell GM seeds when the technology is unreliable and hazardous? Were there no mechanisms in place to make them accountable for their products? A regulatory framework comprising of the Genetic Engineering Approval Committee and the Review Committee on Genetic Manipulation does exist. However, going by the performance of these bodies, it seems that they are keen to protect the interest of biotech companies at the expense of farmers. The RCGM is housed in a department which actively funds biotech crop development, and therefore it is not clear how they can regulate trials and approval of biotech crops. कि हम पिछले महीने प्रधानमंत्री जी से मिले थे और हमने प्रधानमंत्री जी को ये कहा कि ये जो जेनेटिक फार्मिंग को आप पुश कर रहे हैं, किसानों को उसकी तरफ दिखा रहे हैं, वो एक ऐसी तकनीकी है जिसके बारे में अभी दुनिया में बहस है। कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि ये जो तकनीकी है ये इंसान के लिए, ये वातावरण के लिए, ये ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए फ़ायदेमंद है। आज तक कोई रिसर्च रिपोर्ट ऐसी नहीं है। कुछ रिपोर्ट हैं तो वो उन्हीं की हैं जिन कंपनियों ने इनको बनाया। हिंदुस्तान सरकार ने अपने यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, इस पर कोई चेक नहीं है, कोई इस पर रिसर्च नहीं हुई। चोर को ही चौकीदार का काम दे दिया गया। उन्हीं कंपनियों को कह दिया गया कि आप लोग ही इसे वॉच करेंगे, इसका कोई नुकसान तो नहीं होता। तो कभी आज तक ऐसा हुआ है कि चोर किसी मकान की रखवाली करके उसको प्रोटेक्ट करेगा? वो चोरी करने आया, उसका काम चोरी का, वो चोरी करके ले जाएगा। हमने प्रधानमंत्री जी को बताया कि इस देश को बचाओ, इस देश के किसान को बचाओ आप। This laxity in regulatory framework is substantiated by the many biosafety violations in field trials of Bt okra and Bt brinjal. Farmers in whose fields such trials are being undertaken by the companies are not even told about the nature of seeds. Ignoring calls